Hey everyone. Hello, good evening. Hi Aditya. Hello Gauri. Good evening everyone. This is our first lecture on logarithms. Come, hello Prince. Good evening Shweta. Alright, my name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer with over 6 years of experience. I've trained over 2 lakh students in doing so. The next time you go on Instagram, please don't forget to follow #CatLiveDaily. Also, please get yourselves added to these 2 Telegram groups. The links for these groups are provided in the description below. If you are not a part of these groups, please click on the links using your phone and get yourselves added to these groups. This is where you will get updates for all upcoming sessions and everything that we have planned for your CAT prep. These are the upcoming batches on Unacademy. These are upcoming and ongoing batches. This is an ongoing batch. This is called the Striker batch for CAT 2021. All top educators are a part of these groups. There's a specific group for Quant, a specific batch for Quant, right? Top educators from Quant, and also a complete weekend batch that is starting on 27th of Feb. Yes, if you want to become a part of this batch, this is a new batch starting on 27th. Become a part of this. These educators will be handling the sessions for you. Yeah. Hi Tanishk, I'm doing great buddy, thank you so much for asking. To become a part of these batches, all you have to do is take the subscription. You can pick up a plus subscription, use my referral code Surana Life. Most preferred packages are 12 and the 24-month one, but you can also pick any of these. Use my referral code Surana Life to get your discount of 10%. This discount of 10% is up and valid only for the next few days. So if you're planning on taking the subscription someday later, please go ahead and do it right away so that you could get the full benefit of the discount. Also, these are our toppers from the last year. Yes, if you take the iconic subscription, then you get a personal mentor who would help you every step of the way. You will get personalized test analysis and reports telling you what are your strong areas, what are your weak areas, which of those tests that you took spent more time where, all of that. There'll be standalone other management entrance test preparation and complete guidance that will help you understand which other management entrance tests should you take apart from CAT, which ones will be beneficial for you. Your mentor would also help you understand what would be the benefits of which test. Yes, you get a chance to get mentored by top B school alumni like IIM Bangalore, Ahmedabad, Calcutta, and so. Yes, so if you want to subscribe yourselves onto the iconic package, then all you have to do is pick one of these packages. You can use my referral code here also, Surana Life. This will fetch you a discount of 10%. Yes. So for about 3,000 rupees a month, you will now get a personal mentor who will help you every step of the way. There's no cost EMI options also available so that you could, split your way through. That being said, shall we begin with logarithms? Are you guys ready? Hi Preeti, hello Shreyanshi, hi Siddharth, hello Ivanshi, hi Subham. Hello Yogita, good evening everybody. If you haven't already hit like on this video, go ahead and do that. Video pe like kar lo jaldi se.
चलो logarithm start करेंगे, right? To understand logarithms, what you need to know is a very common fact about log, right? If you haven't taken log in your school, this might be a little confusing for you, so try to stay along with me. Yes, so if I tell you that, let's say if I tell you that a to the power b is equal to x, if I tell you a to the power b is equal to x, then you would know that this part is called the base. Yes, this is called your argument. Yeah, and this would be the value of this is the exponent. Yes, so when you convert this in terms of log, then what happens? Log of the base here is what? A of this argument. Yes, log x to the base a, we call this as log x to the base a. This is your lingo here, right? This is how you say this. So log x to the base a will be equal to this exponent, which is b. Are you getting this? Yeah, so if you have a term, let's say if I tell you that 2 raised to the power 3 is equal to 8, if I tell you 2 raised to the power 3 is equal to 8, then what do you know? You know that log 8 to the base 2 is equal to 3. Yes, I hope you are able to understand this. ये आ रहा समझ में? Yes. Now, how does log help us? Log helps us especially when you have exponential terms. Yes, log helps you when you have to do complex calculations. Log also helps you when you want to convert direct exponential expressions into logarithmic functions. Okay. Hi Preeti, I'm doing great, thank you so much. Hello Vikas, good evening. Yeah, so to be able to answer questions from log, first of all log के importance देख लेते हैं, right? We've had previous year exams जहाँ पे previous year test जहाँ पे you had 2 questions, 3 questions coming from log. Yes, so this is pretty important, especially in algebra section. This is very important. Okay, now with log, to be able to answer questions from log, all you need is the basic rules of log, which we'll be covering into today's session. At the same time, you will need a little better perspective. Yes, a little perspective when it comes to looking at the expressions. ठीक है, hi Tanay. Hello. Done. So let's start with the basic rules of log. Before that, let's quickly talk about a few conditions. Yes, so what are the conditions? If I say that b to the power y is equal to x, then log x to the base b, whatever is the base of the exponent will become the base here. The value of this becomes the argument and this becomes the result of it. Yes, so here there are a few rules. Rule number 1 is b and x, right? B and x both have to be positive real numbers, otherwise this wouldn't work. And b cannot be equal to 1, right? Your base cannot be equal to 1. If your base is equal to 1, then you will have a messed up thing, because 1 to the power anything, yes, 1 to the power anything will be equal to 1 only, right? So b cannot be equal to 1, your base cannot be equal to 1, and your value of y, this y will only be negative if and only if x lies between 0 and 1, right? If this x lies between 0 and 1, only then y will be negative, otherwise y will always be positive. Cool? Are you getting this? Guys, so if you have, let's say if you have log 10 to the base 100, then this will be equal to minus 2. Why? Because if you take 100, raise it to the power, not, sorry,
Yeah, log 10 to the base 100 is actually 1 by 2, not minus 2, 1 by 2. Yes, but if you take log, let's say if you want y will be negative, right? Y will only be negative if you have reciprocal. For example, if you take a term, let's say 10 raised to the power minus 2. Yes, 10 raised to the power minus 2 is what? 1 by 100, which lies between 0 and 1. Yes, so what happens here? You get log of 1 by 100 to the base 10 will be equal to minus 2. Getting it? Yes. So when this is between 0 and 1, between 0 and 1 should be positive always, but when this is between 0 and 1, then you get a negative term. Otherwise it will always be positive. Cool. That being said, let's quickly get into some of the rules, right? First, let's talk about operations on logarithms. Yeah, when you add two terms, yes, two logarithmic expressions of the same base, yeah, then you get log of the same base, but then you take the log of what? The product of the two terms. Yes, for example, if you want to take if you want to find out log 8 to the base 2 plus log 16 to the base 2, yes, if you add this you will basically get what? Log 8 into 16, that is 128 to the base 2. Yes, if you want to understand this better, let's write this in the exponential form. Yes, if you write this in the exponential form, what do you basically get? You get 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 is equal to 16, and 2 to the power 7 is equal to 128. So 3 plus 4 is equal to 7. Are you getting this? Yes. ठीक है. इस सबसे सर पिघलने वाले नहीं है. ठीक है. So this into this is equal to this, है ना? That's how this works. Cool. Done क्या? So log 8 to the base 2 is basically 3, log 16 to the base 2 is 4. When you add this 3 and 4, you get 7. So log 128 to the base 2 is 7. Done. So this is a rule of the sum. Then if you take the difference of two terms with the same base, all these have a very common thing, that the base must be equal. Yes, if the base are equal and you subtract two terms in logarithmic expressions, then you get the quotient of it. Yes, if you take the same example, take log 16 to the base 2 minus log 8 to the base 2, then you will get what? Log log 16 by 8 to the base 2. Yes, which is what? Log 2 to the base 2. Are you getting this? Yes. So what happens here? What happens here? You're basically dividing. Yes, this is 2 to the power 4 divided by 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 1. Are you getting this? So 4 minus 3 is equal to 1. Yes. So this is the rule of differences or quotient, however you want to call it. Yeah, and the third rule is the rule of exponents. Third rule is the rule of exponents. Yes, log b, log x to the power y to the base b will be equal to y into log x to the base b. Whatever is the exponent gets multiplied here. Whatever is the exponent gets multiplied here, right? For example, if you have log 2 cube to the base 2, yes, or take log 8 to the base 2, this will be equal to what? Log 2 cube to the base 2, correct? This is nothing but 3 times
log 2 to the base 2, which is equal to 3. So you can get this if you use exponents. Yeah, so what happens, you're basically doing what, when you bring out the exponent here, you're saying this is 2 to the power 1 whole cube 3. Yes, which gives us what, 2 to the power 3. This is the 3 part here. Getting it? यस सिद्धार्थ, नहीं मेरे साइड से कोई बफर नहीं है, आपके साइड से बफर है, एक बार रिफ्रेश करो, ठीक हो जाएगा. या are these 3 rules done? These are very important rules for you to be able to apply them in basic concepts. yes, basic questions में ये लगाओगे आपको आंसर डेफिनेटली आएगा. ठीक है, चलो. Further, you have a different set of rules for bases. Yes, कभी कभी जब base बदलना पड़े, right, when you have to change the base, convert the base, then you have different rules. The first rule is the rule of reciprocal. That is, log b to the base a can be written as 1 by log a to the base b. यहाँ पे base a है, यहाँ पे base b है. So if you want to interchange, yes, if you want to interchange the base with the argument, then you basically take the reciprocal of the entire thing. Yes, just like this, if you say 2 to the power 3 is equal to 8, and if you change this, what will it happen? 2 to the power 1 will become equal to 8 to the power 1 by 3. yes, तो यहाँ पे जो reciprocal ले रहे हैं, यहाँ पे जो अपन ने reciprocal लिया वही ये reciprocal है. कुल समझ में आ रहा है आपको? बट इफ यू वांट टू एंटायरली चेंज द बेस को पूरा ही चेंज करना है, देन व्हाट डू यू डू? इफ लेट्स से log b to the base a is your expression and you want to bring in a new base altogether, दूसरा बेस लेके आना है, तो what do? You divide log b, the argument, to the base x by log a to the base x, which is this. Yes, are you getting it? So if you have, let's say if you have log 16 to the base 4, yes, log 16 to the base 4, इसको अगर if you want to write this in terms of log 2, जूही थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, वहाँ पे अच्छे से समझाया मैंने, पास्ट में 2 मिनट रिवाइंड करके देखिए, वहाँ पे अच्छे से समझाया मैंने. सो इफ यू वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ log टू द बेस 2, yes, then what do? You divide log base 2 of 16 by log 4 by 16. Getting it? This will be equal to what? Log 16 to the base 2 is what? You write 16 as 2 to the power 4, so this will be 4, this will be 2, this is equal to 2, this will also be equal to 2. कैसे? log 4 square to the base 4, right? This is 2 times log 4 to the base 4, which is equal to 2. Yeah, here what you need to know is how do we get the values of these, right? नॉर्मली लॉग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लॉग में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. यस, वेरी लिटिल. यू गेट मोर रूल बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, न्यू बेस अगर लेके आना है तो ये रूल हो गया. डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज रूल्स बैक टू बैक, कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है. एग्जाम्पल्स करेंगे तो सब यूज आ जाएंगे वहाँ पे. ठीक है, now let's talk about values of logarithms, right? If you have log of 0, right, log of 0 of any base, कोई भी base पे अगर आप log 0 निकालोगे तो it has no value, it is undefined. Yes, it is undefined. What does it mean? a to the any power, right, a raised to any power n will only be 0 if a is equal to 0, correct? अगर a 0 है तो a raised to any power will always be 0. बट अपन ने क्या देखा है कि a base cannot be equal to 0. yes, base can never be equal to 0, है ना? clear? So this will be undefined. Second rule is if you go for
log 1 ऑफ एनी बेस, कोई भी बेस हो, अगर log 1 लेके आ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट log 1 ऑफ base 10, this will also be equal to 0. Yes, why? क्योंकि 10 to the power what will give you 1, 10 to the power 0, correct? 10 to the power 0 will be equal to 1. So if you want 10 to any power, 10 raised to any power should be equal to 1, that will only apply when the exponent is what? 0. समझ गए? That is why log 1 to the base, any base, a, b, c, x, y, z, 3, 4, 5, जो भी base will always be equal to 0. Yes? log के direct questions आते हैं, definitely आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? And log a to the base a, yes, log a to the base a, argument और base अगर same है तो उसका value 1 रहता है. क्यों? क्योंकि let's say 10, yes, log 10 to the base 10 will be equal to 1. Why? Because 10 raised to power what? 10 raised to what power will give you 10? 1. This is that 1. समझ रहे हो? Yes, 10 raised to what power will give you 10? 1. Getting it? Yes, इसीलिए बेस में 1 will not be acceptable, क्योंकि 1 to power 1 will be equal to 1, 1 to power 2 will be equal to 1, 1 to power 3 equal to 1. तो जब मैं log to the base 1 निकालता हूँ of any term, yes, कोई भी term निकाल लूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा? A non defined term, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आंसर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Cool? गौरी not defined. ठीक है, log 1 to the base 1 will be not defined. इसीलिए हम लोग base cannot be equal to 1 बोलते हैं, राइट? यहाँ पे base कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वो वैल्यू फिर undefined हो जाएगा. ठीक है, चलो. हाय साई, हेलो. What will be log 1 by a to the base a? You can write log 1 by a to the base a like this, है ना? कैसे लिखोगे इसको? log 1 by a is basically a to the power -1, है ना? by a. Exponent gets multiplied, so you get -1 into log a to the base a. log a to the base a क्या होगा? 1. So -1 into 1 is how much? -1. That is why this is -1. Yeah. And if you have log a power b raised to a, log a power b raised to a क्या हो जाएगा ये? If you want to understand this, then listen to this. ये क्या हो जाएगा? log a power b base a is equal to b को मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू log a to the base a. अपने को पता है log a to the base a is 1, so b into 1 is what? b. तो जो भी एक्सपोनेंट होगा that will become the value. Yes, that is why in previous questions, previous examples में यहाँ पे देखो, when we had log 4 square to the base 4, log 4 square to the base 4, that is equal to 2. Yes, because log 4 to the base 4, log 4 to the base 4 is 1. Yes, so 1 into 2, 2. ठीक है, डन. इसमें इन रूल्स में कोई डाउट किसी को भी? एंड द फाइनल रूल, दिस फाइनल रूल, व्हाट डज इट से? a रेज टू log b टू द बेस a. एक्सपोनेंट का बेस और log का बेस अगर सेम है, एक्सपोनेंट का बेस और log का बेस अगर सेम है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? आर्ग्यूमेंट. यस, ये समझ रहे हो क्या आप लोग? So if you take a very basic example, तो ही चले जा भाई. हाँ, if you take a very basic example, for example 2 raised to the power log 8 base 2, yes, this will always be equal to 8. समझ रहे हो? अगर एक्सपोनेंट का बेस और log का बेस सेम है, तो whatever is your argument will become your value.
यस वाई, क्योंकि 2 to the power log 8 base 2 कितना है 3, so 2 power 3 is what 8 satisfies. Cool. एक बार सब yes बोल दो, we will move on to examples now. Send yes and we'll move on to examples. यूज़ क्या है प्रिंस, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए होता है, ये कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए होता है. यस ये अगर आपने अगर फिजिक्स लिया है, इफ़ यू हैव टेकन फिजिक्स, इफ़ यू वांट टू डू सम एक्सट्रीम कैलकुलेशंस, फॉर एग्जांपल इफ़ यू, छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ अभी के लिए, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज़ you know 81 into let's say 64, yes 81 into 64 अगर पूछा है, और if you have the logarithmic values, yes then you can write this as what 81 can be written as what, if you take it to the base, चलो दोनों को एक ही बेस में लेंगे, let's say 27, दोनों को एक ही बेस में लेंगे, बेस 3 अगर लेंगे तो 81 can be written as what log 81 to the base 3 plus log 27 to the base 3. Yes, the log 81 to the base 3 is what, 3 power 4 is 81, 3 power 3 is 81, which is 7. इसका फिर आप एंटी लॉग निकालोगे, 7 का एंटी लॉग निकालोगे, दैट इज एंटी लॉग base 3 of 7. This will give you your answer. Yes, provided you know these values. Getting it? या तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, 3 to the power 7, यस विच इज व्हाट 2187. दिस इज योर आंसर. गेटिंग इट? ये आ रहा है समझ में आप लोगों को? ये है लॉगरिदम्स का मैथ्स में यूज. Not just maths, but wherever you have complex calculations, you can use that. ठीक है, चलो अब before doing number of digits, let's do some examples. So quickly try this question. जल्दी से ये question try करो. जल्दी से इसका आंसर बताओ. वाह, थैंक यू प्रीति, वेरी गुड. मिलन सिंपल ही तो था, अपन ने निकाल लिया ना. log 7 एंटी log 7 to the base 3 is basically 3 raised to the power 7. that's it. ठीक है, log पे जो करते हो उसका इन्वर्स करना. that's it. don't worry, टेंशन मत लो, हो जाएगा वो, इजीली हो जाएगा. नहीं उसका वैल्यू क्या रहेगा शुभम, वो पूछा है, इसका वैल्यू क्या रहेगा. सो व्हाट आर दे सेइंग, वी वांट टू राइट b इक्वल टू 625 इन द फॉर्म ऑफ बेस 5. यस, तो इफ यू टेक log 625 to the base 5, that's basically equal to what, log 625 is 25 square or 5 power 4 to the base 5. Yes, which will be equal to 4 into log 5 to the base 5. log 5 to the base 5 1 रहेगा, तो आंसर क्या हो गया 4. Yes. ठीक है, सुपर.
चलो क्विकली आंसर दिस, ये वाला ट्राई करो। मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अपन जब उसके एग्जांपल्स करेंगे वी विल डू प्रैक्टिस सेशन ऑन अलजेब्रा आल्सो। ये अभी अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, डोंट वरी। वी विल डू एग्जाम्पल स्पेशल सेशंस, जैसे अभी अरिथमेटिक का अपन ने ख़त्म किया, आज सीक्वेंस एंड सीरीज़ का किया। अरित्रा आप शायद अटेंड नहीं कर रहे हो वो वाले, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो ट्राई अटेंडिंग देम लाइव, आपको हेल्प करेगा वो। अपन वो सारे क्वेश्चन टाइप्स जो है वी विल डू इट इन स्पेशल क्लासेस, ठीक है? एनीबडी आंसर टू दिस, किसी को आया? बी अचल आदित्य मिलन से बी। ओ बहन प्रीति गोस्वामी, बहन शादी हो गई है मेरी, कहीं और चलाओ, चल रहा है तो। सुपर, वेरी गुड। श्रेयशी, सिद्धार्थ, तनिष्क, वेरी गुड। मिलन, सुपर। आदित्य, अचल। So what is happening here? See, they are asking what is log base m, log 8 base m, right? They are asking what is log 8 base m. So 8 can be written as what? 8 I can write it as what? 8 is nothing but 48 by 6, right? तो इसको मैं 48 by 6 लिख सकता हूँ to the base m, yes. तो ये क्या हो गया? दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ व्हाट फॉर्म? log a by b to the base x. This can be written as what? log a to the base x minus log b to the base x, है ना? तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे, if we write this in this format, what will we get? We will get log 8 to the base m is basically equal to log 48 to the base m minus log 6 to the base m. log 48 to the base m का वैल्यू अपन को दे दिया है, क्या है? 4, माइनस log 6 to the base m का वैल्यू अपन को दे दिया है 1, so 1 minus 4 is what? 3. So log 8 to the base m is equal to 3. Yes, beautiful guys, very good. ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो जल्दी से। अरे बिल्डअप होने के पहले ख़त्म कर देना चाहिए। पेड़ उगने के पहले ही पौधे को ये काट दिया, अब वो क्या ही पेड़ उगेगा। राइट मिलन, अरे तेरा बस करो यार। पहली बात तो वो लड़का है, पहली बात तो वो लड़का है, ठीक है? बट यार बंदे ने बहुत अच्छा हार्डवर्क करा है, इसने हार्डवर्क करा है, एकदम कॉमन सा नाम ने लेके प्रीति गोस्वामी अच्छा नाम लिया है, डीपीवीपी सेट किया है, सो 100 marks for that. Achal says the answer to this is B. How about others? Milan says B. Superb.
अरे शुभम, अपन सब सीधा फैक्ट्स फेंकते, फैक्ट्स। वेरी गुड श्रेयसी, गौरी, हेलो राहुल, हाय। अक्षित सेज बी, वेरी गुड अक्षित। हाँ जी गाइस, वेरी गुड आदित्य, सुपर विवांशी। सो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे क्या चल रहा है? सो दे आर सेइंग दैट log 256 to the base x is equal to a, right? इसको we can do it in two methods. We can do it in two methods. पहले log के थ्रू ही करते हैं, right? Let's do it using log. Can I write log? Can I write 256 as 2 to the power 8? Yes. तो ये क्या हो जाएगा? log 2 to the power 8 base x is equal to a, है ना? तो what do you get? This is exponent, exponent को multiply कर लिया, 8 into log 2 to the base x is equal to a. अपने को क्या चाहिए? log 2 to the base x का वैल्यू चाहिए. So log 2 to the base x will be equal to what? a by 8. Yes, which is option B. You can also use exponents here. ऐसे नहीं करना है, exponents के साथ करना है तो भी कर सकते हो. कैसे करोगे? हाउ कैन आई राइट दिस एज? ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, सो वी नो x टू द पावर a इज 256. यस, x टू द पावर a इज 256, है ना? सो आई कैन राइट दिस एज x पावर a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8. यस, x पावर a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8. अपने को क्या पूछा है कि 2 पावर वॉट इज इक्वल टू x, है ना? यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया? 2 टू द पावर वॉट इज इक्वल टू x. तो इसमें मैं क्या करूंगा? x को आई विल राइट इट ऑन वन साइड टेकिंग एथ रूट. x इज इक्वल टू एथ रूट, एथ नहीं a वाला रूट ऑफ 2 पावर 8, विच कैन बी रिटन एज व्हाट? दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 8 by a is equal to x. Yes. What do we want? अपने को log x to the power 2 चाहिए. Yes, log x to the power 2 चाहिए. So this will turn out to be how much? a by 8. Got it? Everybody? इसमें किसी को कोई डाउट? या फिर यहाँ पे ये जाने दो. Let this go. Rewrite this as like this. 2 is equal to x to the power a by 8. Yes, so क्या पावर हो गया? a by 8 हो गया. Yes, ये गलत लिख दिया मैंने. It should be x to the power what should be equal to 2. ठीक है? Done. नहीं मिलन, समझा रहा हूँ. अगर ये काम नहीं करेगा, कई बार ऐसे होगा, कई बार ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जहाँ पे ये काम ना करे, तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव. यस, डन. चलो अगला ट्राई करो, क्या चल रहा है? बाय बाय प्रीति, टेक केयर. अपना वो कबीर मिल जाए तो उसको बोल देना भाई थोड़ा कम पिया कर, किडनी विडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा. सुपर राहुल, वेरी गुड. वेरी गुड राहुल. अगर SBI अगर आप PO के लिए देख रहे हो तो दिस विल गेट यू ऑल इंफॉर्मेशन दैट यू नीड फॉर एडवांस लेवल. चलो आ जाओ. सुपर. जल्दी करो ये वाला ट्राई, क्विक. अरे नहीं शुभम, तुसी कल जाते आज जाओ. आज जाते अभी जाओ.
हाय सुरभि। नहीं मैं एकदम चंगा हूँ, मैं एकदम ऑल गुड। आप लोगों की दुआ होते हुए मेरे को क्या हो जाएगा, आप लोगों की दुआ और प्रिया का प्यार होते मेरे को क्या ही हो जाएगा। Try this one out. मिलन इवांशी से A, बाकी लोग श्रुति से A, सुपर्ब। सुबह बचल, वेरी गुड कौरी। तो यहाँ पे बस यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, दैट्स इट। वेरी गुड सुरभि, पर्सपेक्टिव को चेंज करो, यू विल गेट योर आंसर। सुपर्ब सिद्धार्थ, वेरी गुड तनिष्क। So what are they asking? They are asking what is log 0.27 to the base x का value. Yes, I can write this as what? 0.27 is nothing but 27 by 100. Yes, to the base x. इसको मैं वापस स्प्लिट करूंगा तो क्या हो जाएगा? log 27 to the base x minus log 100 to the base x, है ना? Yes. log 27 to the base x को मेरे को 3 के टर्म्स में लिखना है. I have to write it in terms of 3. So I know 3 cube is this, right? So log 3 cube to the base x. Yes, minus log 10 दिया हुआ है, 10 का वैल्यू दिया है तो I can write this as what? 10 square to the base x, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 times log 3 to the base x minus 2 times log 10 to the base x. log 3 to the base x का वैल्यू अपने को मिला है which is 7. So 3 times 7 minus 2 times log 10 to the base x का वैल्यू क्या है? 4. 2 times 4. This is what? 21 minus 8 which is 13. So इसका वैल्यू क्या हो गया? 13. Yeah. ठीक है, यू कैन, अगर आपको एक्सपोनेंट्स में करना है तो कर सकते हो. एक्सपोनेंट्स में अगर करना है तो यू कैन डू इट. आई वुड सजेस्ट नॉट, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा. यस, यू गेट व्हाट? अगर log 3 to the base x is equal to 7, then what does it mean? It means x to the power 7 is equal to 3. Yes, x to the power 7 is equal to 3. अपने को 27 चाहिए. इफ़ यू वांट 27 then what do you do? 3 क्यूब, दोनों साइड क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? x to the power 21 is equal to 27. यस, क्यूब कर रहे दोनों साइड, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 21. सेम वे इफ यू डू फॉर log 10 to the base x is equal to 4. So what do you know? x to the power 4 is equal to 10. अपने को 100 चाहिए तो what do you do? Square. So x power 8 is equal to 100. To divide both of this, if you divide 27 by 100 you get 0.27, which is x power 21 by x power 8, which is x power 13 is 0.27. इसको वापस आप लॉगरिदमिक फंक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? log 0.27 of the base x is equal to 30. समझ रहे हो? This is an alternative. You convert if you don't want to deal in logarithmic expressions. अगर आपको logarithm के साथ नहीं करना है तो you can convert them into exponents. Deal in exponents. Surds and Indices के rules लगेंगे यहाँ पे. Yes. Solve करके फिर वापस convert कर लो. Try the next question. करो कोशिश.
Thank you so much, Surabhi. No, Akash, it's not too late, not yet. It's just March, right? So you have a solid 7 odd months. 7 से ज़्यादा months है आपके पास. So you can still cope with it, provided you quickly go ahead and start with the preparation and not waste any more time. ठीक? Milan and Surabhi say A. Others? Siddharth says A, very good. Whenever you look at logarithmic expressions, your focus must be on the bases first. Base पे पहले देखो, यहाँ पे base 5 है, यहाँ पे base 20 है, यहाँ पे base y है. Bases change हो रहे हैं, so use conversion of bases. Very good. Siddharth, Achal, Tanishq, Shreyashi, very good. No issues, Akash. You can anytime come up with questions. Don't worry. And quant for CAT is not actually very complicated. It's just that you will need some basics. I mean, you have to be extremely strong with the basics, and you'll need some practice. That will be way more than enough. Very good, Gauri. And it's a good thing that your VARC and DILR is good. Yes. Those are the areas where people usually struggle, so big tension gone. ठीक है? मिलन कल करेंगे ना? कल जब करेंगे, tomorrow we have a स्पेशल सेशन प्लान्ड 11 AM का. कल भी 11 बजे करेंगे, तब आना आप. क्वेश्चन वो डाउट लेके हम वापस समझा देंगे. ठीक है? वी आर डूइंग अ मैराथन सेशन टुमारो 11 AM. एनी टाइम आकाश. चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सो what is it? Looking at the base, we know that we will need a base conversion. Yes. What do we want the base to be in terms of y? है ना, बेस y होना चाहिए. तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है. We can very well do it. So if log y to the base 5 is equal to p, then what do you know? If I interchange the bases, if I write log 5 to the base y, it will be what? 1 by p. Correct? Same way, if I rewrite this, log y to the base 20 is equal to q, then log 20 to the base y is equal to 1 by q, reciprocal, है ना? Yes. So what we want is the value of log 10. Yes, log 10 to the base y. Now we have to write 10 in terms of 20 and 5. Yes, we have to write it in terms of 20 and 5. So what do you know? Can I write this as log 100 to the power 1 by 2 base y? Will that be okay? 100 power 1 by 2 is square root of 100, which is 10. Yes. So this will become what? 1 by 2 into log 10. Log 100 is what? 20 into 5. Yes, to the base y. So now it becomes extremely simple. You rewrite this as 1 by 2 को common ले लो. Write this as what? Log 20 to the base y plus log 5 to the base y. Yes, this becomes equal to 1 by 2. Log 20 to the base y is what? 1 by q plus 1 by p.
Yeah, so if you take the LCM and add it, what do you get? You get P plus Q by 2 times PQ. This is power minus 1. If this is power minus 1, this means this is 1 by 2 times PQ. Power to the numerator is P plus Q. This is your answer. Yes, got it. Now at this place, if you also want to go for plugging in, if you want to assume the values, you can. Yes, if you want to assume the values, you can very well do it. Yes, but just make sure that you have y as a power of 5 as well as a power of 20, then it will become easy. But that I think is a little difficult. ठीक है, करेंगे next. चलो. Gauri, for tomorrow again AP GP sequence and series. AGP नहीं कराए थे क्या YouTube पे? YouTube पे कराए थे शायद AGP, HP AGP कराए थे. नहीं कराए तो फिर वो बाद में करा देंगे, डोंट वरी. दैट्स लिटिल टू एडवांस्ड, वो बाद में करा देंगे. So my parents are telling if I don't make it to any top IIMs, I can't do anything else. What is your suggestion? Feeling low. There is nothing like this, Darshan. See, this is one common misconception कि अगर आप see, even if you take top 10 colleges, right? If you take top 10 colleges, then only the top 3 colleges are IIMs, right? There are other colleges also that fall under that. So you don't have to worry about being in an IIM only. Yes, but if you do get it in an IIM, then that's a very good thing. If you do get it in an IIM, that's a very good thing. But if you don't, then don't worry. It's okay, relax. Yes, there are so many people who I know who have not been anywhere close to IIM B, A or C, but they're still doing extremely well in their life. Yeah, so relax, don't worry. Very good. Everybody says the answer to this question is C. Superb. So what is the value of log 162 to the base 3? You can't find the direct value because you know 162 is not a power of 3. Log 2 is also not a power of 3. So what do? Log a to the base x minus log b to the base x can be written as log a by b to the base x. Yes, so do the same thing. Log 162 to the base 3 minus log 2 to the base 3 is basically log 162 by 2 to the base 3. This gives you what? Log 162 by 2 is 81 to the base 3. This can be written as 4 times log 3 to the base 3. So your answer is what? 4. ये कैसे आया 4 times? Because 81 is 3 to the power 4. 3 to the power 4 is 81. So 4 times this. Yeah. Done? Any questions, queries guys इसमें? किसी को भी? नहीं ना? चलो अगला ट्राई करो. सेम प्रोसेस मिलन, सेम प्रोसेस.
कीप इन माइंड द बेसेस गाइस, बेस को ध्यान में रख के करना, ओके? जो भी आप सॉल्व कर रहे हो बेस को ध्यान में रख के करना। A, Yogita and Aditya say A. How about others? First thing that you should look at are the bases. Yes, once you're done with the bases, then we can deal with the arguments. बाकी लोग ट्राई कर रहे हो क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर बच्चल, तनेश, श्रेयसी, मिलन, सिद्धार्थ, वेरी गुड. So what's happening? See, we want bases to be together. 4 इसको साथ में रखेंगे, 5 इसको साथ में रखेंगे, right? So let's put it like this: log 500 to the base 5 minus 2 times log 2 to the base 5 plus क्या है, log 32 to the base 4 plus log 8 to the base 4. Yeah, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? ये क्या हो जाएगा? 2 into log 2 to the base 4 कैन बी रिटन एज 2 square which is 4, है ना? So what you will get here is log 500 by 4 to the base 5 plus log 32 into 8. Yes, 32 into 8 to the base 4. 500 by 4 is how much? 125. Log 125 to the base 5 plus log 32 into 8. Yes, 32 into 8 can be written as 16 into 16, करेक्ट? 32 into 8 में से यहाँ से मैं एक 2 निकाल के यहाँ पे दे दूंगा, 16 into 16 which is 16 square or 4 to the power 4. This can be written as log 5 cube to the base 5 plus log 4 to the base 4, 4 power 4 to the base 4. तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, टुगेदर दे आर 7. Yes, गौरी, कल we will do again at 2:30. 2:30 को भी रखेंगे मैराथन, तो आप दोनों अटेंड, अगर पहला वाला नहीं हो रहा है अटेंड तो फिर आप उसका रिकॉर्डिंग देख लो. 2:30 को भी करेंगे, विल डू अ डिफरेंट टॉपिक, आई लेट यू नो व्हाट टॉपिक. सो कल का स्केड्यूल बता देता हूँ, सुनो. Tomorrow's schedule is 11 AM to 1 PM. Yes, sequence and series पे on special. Then 2:30 PM to 4:30 PM. Topic मैं बताऊंगा क्या है. This is also on special. फिर अपना 8:30 to 10:30 वाला. यस, यूट्यूब पे.
we'll be doing more on logarithms. Okay, this is on YouTube. ठीक है, मॉर्निंग में कॉलेज रहता है, आई अंडरस्टैंड, बट क्योंकि इतना दिन गैप दे दिया तो आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन कॉन्सेप्ट्स, है ना। और ये प्रैक्टिस ही है, तो आप इनको बाद में भी देख सकते हो, फिर डाउट्स अगर है तो आप डाउट्स लेके आ सकते हो। ओके चलो ट्राई दिस ना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो कोई नहीं शुभम, डोंट वरी गाइस, फॉर योर प्रिपरेशन आप अपना यूजी पे ध्यान देना मत बंद करना, मतलब बंद मत करना, है ना। कंटिन्यू फोकसिंग ऑन योर यूजी बिकॉज उसके स्कोर्स भी मैटर करेंगे, है ना। प्रिपरेशन अभी अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो डोंट वरी, वॉच द रिकॉर्डिंग्स, कम बैक विद डाउट्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। Okay, Sahil says the answer to this question is A. Others? Very good. Superb. Tanishq, Achal, Milan, Gauri, Aditya, Shreyasi. Very good, very good. हाँ चल, थोड़े बेसिक्स करा रहा हूँ अभी, फिर जब कॉम्प्लेक्स करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा भी बेसिक नहीं है, बट या इसी रेंज में आएंगे क्वेश्चंस। ओके, यू माइट, सो दीज आर वैल्यू बेस्ड भी आ सकते हैं क्वेश्चन, वेरिएबल बेस्ड भी आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, राइट। तो जब हम फंक्शंस भी करेंगे तब भी हम लॉगरिथमिक फंक्शंस करेंगे एक बार, डोंट वरी। ओके चलो सो फटाफट वहीं पे निपटाओ इसको। ये क्या है, log 216 इज व्हाट, 6 क्यूब, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 3 प्लस, अब इसको अंदर ही अंदर निपटाओ, अंदर में ही निपटाओ। ये क्या हो जाएगा, log a minus log b is basically log a by b, right, to the base x. This divided by log 49 to the base x. Yes, तो ये क्या हो गया, 3 plus log 7 to the base x, so 42 by 6 is 7, by 2 times log 7 to the base x. क्यों 2 times, क्योंकि 49 है 7 स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा। सो यू हैव व्हाट, 3 plus 1 by 2, which is how much, 7 by 2. दिस इज योर आंसर, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड भी आएंगे, बट यू विल ऑल्सो गेट वेरिएबल बेस्ड, तो वो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, जल्दी से करो ट्राई। ये पावर -1 है, हाँ, दिस इज पावर -1, 1 प्लस p पावर -1, ये पावर है, यहाँ पे भी पावर है। ओके
मिलन एंड योग्यता से बी। ओके, बाकी लोग वेरी गुड, वेरी गुड। इवांशी, साहिल, अचल, तनिष, श्रेयसी, सिद्धार्थ, सुपर। तो व्हाट हैपेंस हियर, वी नो दैट log 9 to the base 10 is equal to p. What are they asking? They're asking what is log 1 by 90 to the base 10. Log 1 by 90 to the base 10. Yes, you can write this as what? इसको आप कैसे लिख सकते हो? log 1 to the base 10 minus log 90 to the base 10. Yes. है ना? ये दोबारा से कैसे हो जाएगा? This is log 1 of any base is what? 0 minus ये क्या हो जाएगा? log 9 into 10 to the base 10. Yes, which is what? Minus 0 minus whatever is minus log 9 to the base 10 plus log 10 to the base 10. log 10 to the base 10 क्या? 1. log 9 to the base 10 क्या है? p. So this is negative of p minus 1, which is option B. Yes, superb. Next try करो. जो ही ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा यहीं पर, बट अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप कोई बैच ज्वाइन कर लो। यस, सब्सक्रिप्शन ले लो और कोई बैच ज्वाइन कर लो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु लैक्स कॉन्फिडेंस, है ना। टॉप प्रायोरिटी आपकी, नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी दिस व्हेन इट कम्स टू लॉगरिथम्स। वेरी गुड एवरीबॉडी, ऑप्शन बी, सुपर। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? बेस 10, 6, 15 नहीं डील कर सकते, सो व्हाट डू यू डू? एक्सचेंज। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका पूरे का रेसिप्रोकल। सो दिस विल बिकम log 10 to the base 30 प्लस log 6 to the base 30 प्लस log 15 to the base 30. यस, ये पूरा क्या हो जाएगा? log 10 into 6 into 15 to the base 30, which is equal to what? log 900 to the base 30. 900 is nothing but 30 square, so this is 2 into log 30 base 30, which is equal to 2. Yes, done. अगला ट्राई करो।
ओके, ए योग्यता मिलन एंड अचल से ए. How about others? Sahil says A. Very good, Sahil. Okay, so what happens here? Very good, Tanishq, Aditya, Siddharth, Shreyasi, Gauri, very good. So what are they saying? They're saying log p by q. If there is no base mentioned, anywhere, you can consider any base. You can take any base. Okay, अगर base नहीं दिया हुआ है तो कोई भी base आप assume कर सकते हो. Plus, but you have to ensure that you use the same base. Okay, is equal to log p plus q. So if you add this, you're basically multiplying it, right? So क्या हो जाएगा? Log p by q into q by p is equal to log p plus q. Yes, so what are you getting? Log p cancel, q cancel, log 1 is equal to log p plus q. बट अपने को लॉग नहीं चाहिए, अपने को एंटी लॉग लेना है. तो उसका एंटी लॉग निकालोगे तो नॉर्मली यू आर नॉट सपोज टू कैंसल लॉग लाइक दिस. लॉग को आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, राइट? दिस इज नॉट अ वेरिएबल. ये वेरिएबल नहीं है तो कैंसिल नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है? टेकिंग एंटी लॉग. यस, अगर आप एंटी लॉग या एंटी लॉग लेते हो बोथ साइड्स, देन ये लॉग रिजॉल्व हो जाता है एंड यू गेट 1 इज इक्वल टू p प्लस q. ठीक है, विच इज इक्वल टू, विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए. या हाँ, यहाँ पे कुछ भी बेस अस्यूम कर लो, डजेंट मैटर. आप कोई भी बेस अस्यूम कर लो. आपको e अस्यूम करना है, e अस्यूम कर लो. 10 अस्यूम करना है, 10 अस्यूम कर लो. कुछ रैंडम ही अस्यूम करना है, x अस्यूम करना है, x अस्यूम कर लो. एज लॉन्ग एज दे आर इक्वल इट डजेंट मैटर, है ना? चलो, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. माइंड यू गाइज, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है. यस, log x square to the base 2 is not the same as log x to the base 2 the whole square. दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज log x to the base 2 into log x to the base 2. Yes, which is equal to what? Log nothing. ये अलग है. This expression, this is not equal to this. ठीक है, at least not always. Aditya says C. Okay, how about others? Anyone else?
Anyone else? Okay, so if we want to solve this, अपने को ये solve करना है, right? We want to find what is the value of x. The fastest way to do this would be to convert this into an equation that you can understand, right? तो पहले इसको rewrite करो. This is log x to the base 2 whole square minus x power 4 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 times log x to the base 2 minus 32 is equal to 0, right? यहाँ पे क्या करो, since this is a little too complex, replace, introduce a new variable t is equal to log x to the base 2. yes, log x to the base 2 is equal to t कर दिया तो ये क्या हो गया, t square minus 4t minus 32 is equal to 0. yes, अब ये आसान हो गया. Now you factorize minus 32 such a way that the sum is minus 4. yes, so minus 8 and plus 4. तो t के possible values क्या हो गए, t could be 8 or could be minus 4. quadratic solving कर रहा हूँ मैं. yes, तो अपन ने क्या बोला कि this is not possible, right? ये आना possible नहीं है. so what do you get, log x to the base 2 is equal to 8. yes, log x to the base 2 is equal to 8. minus 4 is not possible. yes, 8 जो आपने बोला है आदित्य, that is log x to the base 2. इसको solve करना है मतलब अपने को variable निकालना है, x निकालना है. yes, so if we rewrite this, what do you get, you get 2 to the power 8 is equal to x. मैं इसको I am rewriting this in the exponential form. yes, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2 power 8 which is 256. so actual answer is B. ये x का वैल्यू है, ये log x to the base 2 का वैल्यू है, ये और ये. these are not accepted. ये दोनों trap answers हैं. I hope you understand this. ठीक है, डन. minus 4 is possible, but देखो मैंने क्या बोला था आपको याद है, मैंने बोला था कि the value of log, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, if you get log x to the base 2 is equal to minus 4, that can only be true if x is between 1 and 0. याद है ये मैंने बोला था, x is between 1 and 0. so if x has to be between 1 and 0, यहाँ पे कोई भी आंसर 1 and 0 के बीच में है नहीं है ना. ये नेगेटिव में है, ये ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1, इसलिए मैंने इसको इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था. ये नॉट पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ x इज बिटवीन 0 and 1, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, हियर x विल बेसिकली बी इक्वल टू 1/16. तो अगर 1/16 है आंसर चॉइस में तो ठीक, वरना नहीं है तो cool. next question.
1 को log में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली 1 is basically log a to the base a. log a to the base a करोगे तो वो 1 हो जाएगा। कोई भी जो भी आप बेस ले रहे हो उसी बेस को अगर आप आर्ग्यूमेंट भी बनाओगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है। गौरी, साहिल, इवांशी, मिलन, श्रेयसी से ए, अदर्स सुपर। चलो तो इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, ये क्या है? log 4 to the base 10 plus log 4x plus 1 to the base 10 is equal to log x plus 4 to the base 10 plus 1 है, 1 को I can write it as log 10 to the base 10. Yes, so this is log 10 to the base 10. अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम log 4 into 4x plus 1 to the base 10 is equal to log x plus 4 into 10 to the base 10. Yes, तो ये क्या हो गया? You get 16x plus 4, so log, anti-log ले लो, taking anti-log here, very important. ध्यान में रखो गाइस, प्लीज कैंसिल मत करो। यस, प्लीज कैंसिल मत करो, एंटी-लॉग लो, क्या आ जाएगा? यू विल गेट 4 इंटू हाँ ठीक है, 16x प्लस 4 इज इक्वल टू 10x प्लस 40 और 6x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 6, here is 6 but ये गलत है। like Achal said, this is a trap. They're asking what? Solve for 1 by x. That means you got to take the reciprocal. तो 1 by x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 by 6. Yes, super. चलो अगला ट्राई करो। यहाँ पे this is based on values. This is based on values. They're asking for number of digits. Yes, number of digits का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। ये तो जो भी आपको n दिया होता है, वॉट एवर नंबर इज गिवन टू यू, इफ दे आस्क हाउ मेनी डिजिट्स डज n हैव, yes, find number of digits of n. Yes, this you can find out by plugging into this. Yeah, find out what is the log value of n to the base 10. Take only the integer part, just the integer part. Yes, forget the decimal part. decimal part को भूल जाओ, सिर्फ integer part लो, उस पे अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको number of digits मिल जाएगा। For example, if I take a number like 100, yes, yeah, if I want to find out के how many digits are there in 100, ये तो पता है हमें, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो what is it? Number of digits d is equal to log 100 to the base 10. जो भी इसका वैल्यू आएगा उस पर 1 ऐड करना है आपको, just the integer part. Yes, this is what? 2. log 100 to the base 10 is what? 2 है ना, 10 square 2 into 1, so 2 plus 1 3. Number of digits is 3. समझ में आ रहा है? So how many digits? 1 2 3. Getting it? तो जो भी दिया है, if you want to find out the number of digits of a given expression n, then what do you do?
take the log to the base 10 and take the integer part and add 1 to it. Yes, तो इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं. Quickly try. I'll rewrite the formula. D is what? Log n to the base 10 plus 1. Only take the integer part, just the integer part. Yes, करो try इसको. ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट ये मेथड ये आपको लगवाना चाहिए. आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस वन आउट. यस, सो ट्राई दिस वन आउट फर्स्ट. B guys, they're asking number of digits in 30 square. क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिफाई कर रहे हो इसको? 30 स्क्वायर इज व्हाट? 900. कितने डिजिट्स है इसमें? 3 है ना, समझ रहे हो? अच्छा, अभी मैं इस मेथड में करके बताता हूँ हाउ टू डू इट इन दिस मेथड. Yes, so what do we want? Number of digits of 30 square, which is 900. ठीक है, 30 square. Yes, which can be written as 3 into 10 the whole square, right? तो देखो, what do you do? Number of digits D is what? Log of 3 into 10 the whole square to the base 10, integer part पे plus 1. So this is what? 2 times log 3 to the base 10 plus log 10 to the base 10 plus 1. This is 2 times log 3 to the base 10 का वैल्यू अपन को दे दिया 0.4771. In most cases they will give you the value, right? ये वाला वैल्यू आपको देंगे, अगर वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो ये देंगे, ठीक है. Plus log 10 to the base 10 is what? 1 plus 1. So this is 2 into 1.4771 plus 1. Yes, तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 1.4771 will be 2.9542 plus 1. अपने को ये 0.9542 की कोई ज़रूरत नहीं है. We don't need that. So we eliminate this. We take what? Just 2 plus 1. So D is equal to 3. अब ये सिंपल एक्सप्रेशन था, ये इजी एक्सप्रेशन था, इसलिए आप ऐसे 1 2 3 काउंट करके 3 बोल सकते थे. बट दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. यस, तो एक बार ये वाला ट्राई करो जल्दी से. Quickly try this. Let's see if you can answer this now. वो एक एग्जाम्पल था, वो ट्रेलर था, ये एक्चुअल पिक्चर है. करो जल्दी से इसको सॉल्व. अप्रॉक्सीमेशन नहीं करने को बोला मैंने. अचल प्लीज सुनो, मैंने अप्रॉक्सीमेशन नहीं बोला, मैंने बोला सिर्फ इंटीजर पार्ट को लो, अप्रॉक्सीमेट करने को नहीं बोला मैंने. जस्ट टेक द इंटीजर पार्ट, है ना, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक, इंटीजर पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, वो अपने को चाहिए बस, नॉट अप्रॉक्सीमेशन. अप्रॉक्सीमेशन में तो फिर बहुत झोल हो जाएगा, ठीक है. साहिल
दिस इज log 7 base 10, ठीक है। गलती से हो गया यार, वो बच्चे ही जान लोगे क्या। log 7 to the base 10. Okay, Yogita says D. Others? Yogita and Tanish say D. Achal says B. Okay. So what do we do here? बाकी आप लोग कर रहे हो क्या? Try, guys. Shreyasi says D. Ivanshi says C. Okay. यहाँ पे कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत होगी. Okay. सो यहाँ पे n क्या है अपना? आर n इज 2 to the power 12 into 7 to the power 10. Yes. The number of digits will be equal to log 2 power 12 into 7 power 10 to the base 10 plus 1. ये प्लस 1 मत भूलना, बहुत लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज, सेपरेट कर लो इसको, है ना। log 2 power 12 base 10 प्लस log 7 power 10 base 10 प्लस 1. दिस इज 12 times log 2 base 10 plus 10 times log 7 base 10 plus 1. So 12 into log 2 base 10 क्या है? 0.301. Yes, plus 10 into 0.8451 plus 1. So 12 into 0.301. Please don't miss out. Approximate मत करो यहाँ पे. Please don't approximate here. Yes, please do not. I request, humble request, approximate मत करो यहाँ पे. Go for the actual value. So this is what? 3.612 plus 10 into this is going to be 8.451 plus 1, है ना। सो 3.612 प्लस क्या? 8.415. देखो अप्रॉक्सीमेट करते तो फंस जाते, राइट। सो 8.451 प्लस 3.612 is 12.063, not 11, 12.063 प्लस 1. अपने को ये 0.063 की कोई ज़रूरत नहीं है. वी डोंट वांट दिस. यस, सो व्हाट डू यू गेट? नंबर ऑफ डिजिट्स इज 12 plus 1, so number of digits is 13. समझे everybody? Yes, B is if you approximate, don't approximate, never approximate. log में कभी approximate मत करना, ठीक है? Okay. चलो next question. Okay, sorry, खत्म. So this is the end of our session. Yes. चल, कॉमन मिस्टेक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो. तो अब तक अपन ने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए. वी सीन ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉगरिथम्स. यस,
एक सेकेंड. Yeah. So we've seen all the rules of logarithms. Yes, we have dealt with different types of operations of logarithms. Yeah, we've also looked at number of digits. Yeah, this is done. Tomorrow 8:30 p.m. 24th Feb at 8:30 p.m. we'll be doing some variable based log questions. ठीक है, कल वेरिएबल बेस्ड करेंगे. राइट आदित्य, चलो थैंक यू. ओके, ये guys, this is your scholarship, weekly scholarship test. This will be happening this Sunday 28th Feb. Get a chance to win scholarships up to 28 lakh rupees. To unlock the scholarship, please don't forget to use my referral code Surana Live. Yes, Surana Live use करना मत भूलना. And these are all this is an ongoing batch, this is upcoming batches. Please get yourselves enrolled to this. शुभम, आपको मिला है क्या? आपको मेल आएगा. To your registered mail ID you will receive a mail with instructions. Yes, वो आप यूज कर सकते हो, उसमें समझ में आ जाएगा. तो अगर जो पीपल हुआ है सेइंग कि उनका क्वांट इतना स्ट्रांग नहीं है, देन यू कैन ज्वाइन दिस फॉर एडवांस्ड क्वांट प्रिपरेशन. यस, एडवांस्ड क्वांट प्रेप के लिए यू कैन ज्वाइन दिस बैच. दिस विल बी हैंडल्ड बाय रवि प्रकाश एंड अग्नि मित्रमन. दिस इज हैपनिंग ऑन द 27th complete weekend batch, happening every Saturday and Sunday. Yes, these are the educators. अगर आपको कोई ongoing batch join करना है तो you can also join this. These are the educators. तो इनके लिए all you have to do is take a subscription. 12 months, 24 months ले सकते हो. Use my referral code Surana Live to get your discount of 10%. No cost EMI options भी available है. मतलब अगर आप plus लेना चाहते हो तो it will cost you less than 800 rupees a month. Yes, that is if you use my referral code Surana Live. Or if you are planning on taking Iconic, जहाँ पे आपको मिलेगा personal mentor who will help you every step of the way. टेस्ट एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स आपको बताएगा कि आप कहाँ पे क्या क्या लैक कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट की स्टैंड अलोन प्रिपरेशन, and all other benefits of Plus will also be included in this, right? You will have mentors who are alumni of top B schools. So if you want to take Iconic, then these are the prices for Iconic. You still use my referral code Surana Live to get your 10% discount. ठीक है, ये 10% का discount is only for a few more days, so please use that. ओके शुभम, मेल अगर अब तक नहीं आया है तो आप ऐप पे जाओ. ऐप पे जाके वहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टॉकिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव, राइट? हेल्प डेस्क में बात करने का ऑप्शन है आपके पास, तो वहाँ पे आप एक बार बात करके देखो. या ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू ऑल टुमारो. यस, अंटिल देन कीप योरसेल्फ सेफ एंड हैप्पी. कल सुबह 11 बजे आ जाना. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.